Hello all, very good morning. Online students, am I audible? Okay. So today we'll start with Mesolithic culture. आज का टारगेट है Mesolithic और Neolithic कवर करने का, एंड साथ में दो स्कॉलर्स डी मजुमदार एंड इनके बोस. ओके, एंड इफ टाइम परमिट्स आप लोगों को यूनिट 3.1 के नोट्स मिल जाएंगे. So we'll start with that also. So let's start with Mesolithic first. So Mesolithic ये Mesolithic और Neolithic आज के टाइम पे मींस करंटली सीन लास्ट 2-3 years has been one of the most favorite area of UPSC. Regularly they have been asking question, and in fact this seems more actually कई सारी नई डिस्कवरीज कई सारे नए आइडियाज आ रहे हैं Mesolithic और Neolithic को लेकर, and that's why UPSC has started exploring these areas. Okay, and that's why you should have a fair idea of Mesolithic and Neolithic. Moreover, कभी भी आपको न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल मिलता है स्पेसिफिकली कंसर्निंग Mesolithic and Neolithic, तो टेक इट सीरियसली. ओके, उसका भले एक शॉर्ट नोट बना के लिखना पड़े, बट आप लिख लो उसको. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू बिकॉज़ UPSC हैज बीन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज वाले पेपर में भी Mesolithic Neolithic से कोई क्वेश्चन होगा. मे बी नहीं Mesolithic Neolithic से होगा, तो इट माइट बी चालको और हड़प्पन, मतलब इस वाले एजेस में ज्यादा जा रहे हैं. Paleolithic को उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है. ओके, सो हियर इन केस ऑफ Mesolithic, earlier it was believed that कि Paleo से जो Neo का ट्रांजिशन था, that was in hiatus. Hiatus means एकदम sudden transition from Paleo to Neo happened. But actually what happened that we started discovering certain type of tools in Europe, and these tools and technologies in Europe actually suggested that the transition from Paleo to Neo has not been sudden, but there has been certain age or certain period of transition. Okay, and this transition has mainly happened because Europe was experiencing a drastic climate change. Okay, so during this transition period, the tools, technologies, and the skills or cultural techniques to survive in that particular environment actually altered significantly, and the evidences have been found in the European archaeological sites, and mostly in those areas jahan pe aapko Paleolithic ki sites mili hai, there you will be easily observing a certain transitional era between Paleo and Neo, and this transitional era is called as Mesolithic period. Okay, the transition between Paleo and Neolithic. So this is the transitional era between Paleolithic and Neolithic, and this up is Mesolithic में, since it's the transitional era, you will find a mixture or features of both of them, that is Paleo का भी और Neo के भी कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. In fact, what we are going to observe or what will be the features of Neolithic, you can see that these features will begin the beginning of all those aspects that is associated with Neolithic, that is sedentary lifestyle, domestication of plants and animals, population pressure and all that stuff. The root of this will be observed in the Mesolithic sites. Okay, कि आपको Paleo और Neo के दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे. Paleo धीरे-धीरे डिक्लाइन होता हुआ मिलेगा, and Neo के जो फीचर्स हैं you will find on rising. So आपको यहाँ पे याद नहीं करना है. You just have to remember that it's a transitional feature, transitional era, and तो ट्रांजिशनल है तो खास करके इट विल बी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा ये, बिकॉज़ इट्स अ ट्रांजिशनल एरा. मोरेओवर सिंस इट्स अ ट्रांजिशनल, दैट मींस इट मार्क्स द चेंज. सो इसमें Paleo के फीचर्स भी होंगे एंड Neo के भी होंगे, बट Paleo वाले थोड़े डिक्लाइनिंग ट्रेंड में होंगे एंड Neo विल बी इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, एंड फाइनली एक एस्टैब्लिशमेंट आ जाती है, दैट इज Neolithic sedentary lifestyle will begin. So यहाँ पे द टेंडेंसी टुवर्ड्स सेडेंटिज्म विल एक्चुअली इंक्रीज, एंड दैट्स मेनली बिकॉज़ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ or capability to domesticate plants, capability to domesticate animals, and जिसकी वजह से sedentary lifestyle would begin. Okay, so question आता है कि why did domestication happen? What's the reason that this domestication, उनको जरूरत क्या पड़ी? अभी तक मस्त घूम रहे थे, हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे. Okay, what was the reason for this domestication to happen? क्या अचानक से ऐसा उनकी बत्ती जल गई कि अब से domesticate करना है, या प्लांट्स को भी domesticate करना है, या कल्टीवेट करेंगे, एनिमल्स को भी पालेंगे अपने साथ, ऐसा क्या हो गया? Okay, so हाँ, कैरी मींस तो domestication करेंगे तभी तो सरप्लस आएगा. सरप्लस तो domestication के बाद आएगा कि प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, only then there will be surplus. तो पहला इंटेंशन कहां से आई कि domestication करना चाहिए? So the answer is, the first answer was given by Gordon Childe. He suggested that the major reason for domestication is drastic climate change that happened. Okay, due to drastic climate change in the post-glacial period, rainfall decreased significantly. And rainfall, since it decreased, in that case, people started to settle into shrinking pockets of water. पानी कम था, and इसीलिए oasis और इन सब areas में जहाँ पे pockets of water होंगे, वहाँ पे population of people started to increase significantly. Due to which, the incentive to domesticate plants or animals would have actually, so मतलब resource की shortage की वजह से, and that actually came because of climate change. That this happened. Okay, so just write this. According to Gordon Childe, first reason, according to Gordon Childe, drastic climatic change in post-glacial period, drastic climatic change in post-glacial period led to decline in summer rainfall, in Near East and North Africa. Near East का मतलब यूरोप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. Near East कौन सा होगा? That is the Fertile Crescent वाला region, Israel, Syria, Jordan and all those areas. Near East and North Africa. Rain decreased significantly, and people were forced to retreat into shrinking pockets of water or oasis. Lessened availability of wild resources provided an incentive for people to cultivate grains and to domesticate animals. ठीक है. So climate change जिसकी वजह से रिसोर्स अवेलेबिलिटी में इफेक्ट आएगा, एंड दिस रिसोर्स अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस, एंड ड्यू टू विच इंसेंटिव टू डोमेस्टिकेशन. एक रीजन ये है. ठीक है, बट देयर इज अ क्रिटिसिज्म टू दिस ओपिनियन, वो गिवन बाय रॉबर्ट ब्रेडवुड. ही सजेस्टेड दैट कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसेंटिवाइजेशन होता डोमेस्टिकेशन का, तो दिस वुड हैव हैपेंड मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट आल्सो.
आर गेटिंग दिस कि ये आइस एज तो कई बार खत्म हुआ और पोस्ट ग्लेशियल एज आया और उसके बाद वापस नया आइस एज आया, दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट मल्टीपल टाइम्स। ओके, यूरोप हैज एक्सपीरियंस मल्टीपल आइस एजेस। सो अगर ऐसा हो रहा होता तो पीपल डेफिनेटली वुड हैव इंसेंटिव टू कल्टीवेट और डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पास्ट आल्सो, बट व्हाई डिडंट इट हैपन बिफोर? ये इसी बार क्यों हुआ? आर यू गेटिंग दिस आइडिया कि ये चीज तो पहले भी हो चुकी है, जहां पे हमने देखा निएंडरथल्स का एक्सटिंक्शन क्यों हुआ? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओके, एंड वो मिडिल पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक का जो ट्रांजिशन दैट वाज बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, डेथ ऑफ निएंडरथल्स एक्सटिंक्शन एंड देन राइज ऑफ होमो सेपियंस। सो व्हाई डिडंट द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैपन देन आल्सो? So here, this question is answered by some other scholars. So पहले आप इसे criticism लिख लो, criticism, just write this heading, criticism, by Robert Braidwood. Robert Braidwood. First, that climate change was not very drastic or dramatic. Climate change was not very dramatic, as claimed by Gordon Child. Second, climate change that occurred in Near East, would have occurred earlier too, T-double-O wala, but no similar changes have been observed. ठीक है? So Braidwood says that कि सिर्फ climate change responsible नहीं है. He suggests that climate change at a particular level of culture is responsible. That means their culture should be evolved enough to accept this idea. Paleolithic hunter gatherers के केस में जैसे लोअर स्टोन एज में रहे होंगे तो उनके लिए उनका कल्चर इतना इवॉल्व नहीं था या मेंटल कैपेसिटी इतनी इवॉल्व नहीं थी that they could have think about it. Okay, they were not that intelligent enough to think about that we should be cultivating plants or we should be domesticating animals and all that stuff. Remember lower Paleolithic Homo erectus, 700 to 800 cc of brain, not completely perfectly bipedal भी नहीं थे. Means there were some features that were ape-like. So in that case शायद वो इतने इंटेलिजेंट थे ही नहीं कि वो कभी सोच पाते इस बारे में. So it is the culture that people had was responsible for the acceptance of these features. इसमें आप diffusionism theory का configuration का आइडिया समझ सकते हो. Remember Ruth Benedict idea of configuration और Krober's idea of configuration? So उन्होंने क्या बोला था कि configuration is how the elements they are arranged with respect to one another. And एक नए element का जो acceptance है वो depend करता है कि पुराने elements उसको accept कर पा रहे हैं या नहीं. So I have given you this example. Let's suppose करो कि कोई बहू है. So if a woman has to get married and she goes to her एक patriarchal society में her in-laws house. So the acceptance of that girl depends upon how she is able to modify herself and adjust as per the norms of her in-laws. Only then the people will be accepting her because she has to modify herself in order to get accepted there. Okay, I'm not justifying this or इस तरीके से, but just to make you understand that this is how the culture configuration works. Or you can say that suppose this mic वाला जो structure है, okay, यहाँ पे अलग-अलग parts they are arranged in a particular manner. Now this is the batteries. So इस बैटरी को यहाँ पे आप लगने के लिए एक पर्टिकुलर साइज और शेप का होना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे फिट बैठेगी, only then it will work. So there are batteries of different size and shapes. Okay, जिसका काम है पावर प्रोवाइड करना. But this battery has to be of a specific size and shape in order to get working in this entire structure, in this configuration. Are you getting this idea? Okay, in the same way, कोई new cultural element तभी accept होगा when it is in coherence with the existing configuration. Or the same idea was given by Leslie White. Remember superorganic, suprabiological? अरे यार हाँ ना, कुछ याद है? वो तो लग ही रहा है कितना याद है. So suprabiological, उसने क्या बोला कि that innovations will happen, but the previous stage start or creates the condition for the next stage to come. The predecessor sets up the condition. तो आप किस स्टेज पे हो वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन आपका क्या होगा, नेक्स्ट इन्वेंशन क्या होने वाली है. ओके, इट वोंट बी, एंड गॉर्डन चाइल्ड भी जब हमने पढ़ा था, तो इफ यू विल गो एंड रिवाइज तो यू विल फाइंड दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट गॉर्डन चाइल्ड सेड दैट कि अगर दुनिया दोबारा बनेगी तो जो स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है वो वापस वही बनेंगे. दैट इज पीपल विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद पेलियोलिथिक, देन मीजो एंड नियो, वही स्टेजेस वापस आएंगे. पहले और तो उसको क्रोबर ने क्रिटिसाइज किया था कि नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हो क्योंकि कॉपर की डिस्कवरी बिफोर आयरन वाज जस्ट एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. अगर क्या पता पहले आयरन डिस्कवर हो जाता तो पीपल वुड हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन स्मेल्टिंग अर्लियर देन कॉपर. तो बट द आइडिया रॉबर्ट ब्रेडवुड इज सेइंग इज कि वो डिपेंड करता है कि कल्चर आपका कौन से स्टेज पे है. पहले ये चीज इसलिए नहीं हुई बिकॉज़ द कल्चर वाज नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ चेंजेस. नाउ इट हैज हैपेंड बिकॉज़ द कल्चर वाज रेडी फॉर इट. ओके, सो जस्ट राइट दिस. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्रेडवुड, people did not undertake domestication unless their culture evolved enough for them to handle such an undertaking. ठीक है. सो अब क्या नया आइडिया क्या आया कि क्लाइमेट चेंज वाज नॉट द प्रायोरिटी. देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स हु सजेस्ट, लाइक मार्क कोहेन, ही सजेस्टेड कि पॉपुलेशन प्रेशर वाज द रीजन. पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई थी एक पर्टिकुलर टाइम पे, पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, एंड सिंस पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, व्हाट हैपेंड कि पीपल स्टार्टेड टू मूव इनटू दोस एरियाज दैट वर अर्लियर अनइनहैबिटेड. अब ब्रेक डाउन करेंगे, मान लो यहाँ पे 100 लोग रहते थे, अब 200 हो गए, 1000 हो गए, तो वो छोटे-छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर मूव करने लग जाएंगे बाहर, एंड दे विल मूव इनटू दोस एरियाज दैट वर अर्लियर अनइनहैबिटेड, एंड दैट वुड देन काइंड ऑफ क्रिएट सम नेसेसिटी for them to domesticate plants and animals. But this was a kind of idea that took or that also included the idea of climate change. उन्होंने बोला कि population बढ़ी, but साथ ही साथ climate change भी एक reason था. तो climate change कैसा reason था? That he takes the example of area of Turkey or the Middle East वाला region. So he says that even today if you go to Anatolia region of Turkey highlands, you will find that grasses or wheat-like structures they are growing. ठीक है, क्योंकि वहाँ का climate ऐसा है. So he says that past में भी ऐसा हुआ होगा, that population would have increased and climate change होने की वजह से these kind of grasses would have grown in certain areas. अब लोग जब उस एरिया में गए, when they went into those areas, they would have seen that these grasses are edible, जिसको cereal कहते हैं. Okay, wheat, rice, these are nothing but grasses. Okay, so जब वो उस एरिया में गए होंगे तो they would have discovered that ये तो grasses edible हैं. So initially what would have happened is sedentary foraging. Okay, now there is a scholar Kent Plannery.
सो ही बेसिकली कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि मेसोलिथिक टूल्स जो लोगों के पास थे उससे उससे हार्वेस्टिंग करने की कोशिश की, और उसने देखा कि अगर एक फैमिली 4 लोगों की है, 5 लोगों की है, एंड दे यूज मेसोलिथिक टूल्स टू हार्वेस्ट दिस ग्रासेस, सो इट वुड टेक मतलब कुछ हफ्तों में, मे बी इन 4 to 6 वीक्स, दे विल इजीली बी एबल टू हार्वेस्ट दैट मच ग्रास दैट वुड लास्ट देम फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में, मे बी 4-5 हफ्तों में इतना ग्रास वो हार्वेस्ट कर लेंगे दैट वुड लास्ट देम फॉर 1 ईयर। बट दीस ग्रासेस रिक्वायर्ड अ प्रोसेसिंग टूल, सिलबट्टा चाहिए जिससे आप उसको पीसोगे, उसमें से आटा निकालोगे, जिसको कंज्यूम करोगे। सो दीस वर वेरी हेवी एंड दैट इज व्हाई दीस टूल्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Okay, so सबसे पहले क्या हुआ कि population would have increased, they would have moved into certain areas that would have been uninhabited. Now in these areas they would have discovered such kind of grasses growing. So initially they would have started with sedentary foraging. Sedentary foraging का मतलब कल्टीवेट नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं, जाते हैं, घास तोड़ के लाते हैं, वहीं खा लेते हैं और सो जाते हैं. That is sedentary but foragers. Are you getting this idea? But and due to this sedentary foraging, what actually happened is sedentary lifestyle started, obesity or fat content in the body started to increase because physical activity कम होने लगी. Plus intake of carbohydrates started to increase. So fat content in the body increased, and then due to increased fat content, ovulation increases, and then ovulation would definitely lead to increase in fertility, and increase in fertility, more population. ड्यू टू दिस मोर पॉपुलेशन, अब ये पॉपुलेशन के इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब इवन जो ये वाले रिसोर्सेज हैं, जो ग्रासेस हैं दैट वर ग्रोइंग नेचुरली, वर इवन मतलब उसमें भी क्राइसिस आ गई कि इसमें भी कमी आने लग गई कि जितनी पॉपुलेशन है जो ग्रासेस ग्रो कर रही है वो भी कम है टू फीड दिस पॉपुलेशन। नाउ व्हाट वुड हैव हैपेंड, दे वुड हैव डिसाइडेड कि अब नाउ इज द टाइम फॉर कल्टीवेशन। ओके, मींस पहले तो सेडेंटरी फॉरेजिंग आई होगी, क्लाइमेट चेंज प्लस थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ, and after that due to this it would have further increased the population, जिसकी वजह से crisis would have erupted or due to shortage or less availability of the same resources, and then they would have discovered that these grasses can be grown by some simple methods. Believe that agriculture was discovered by female only because they were the ones who were engaged in collection of the or food gathering वगैरह में वही involved थी, तो उनको पता चल गया होगा कि ये सीड कहीं पे भी डाल दो कहीं से ग्रास ग्रो करने लग जाएगी। So then when the population further increased they would have thought कि अब तो basically crisis का टाइम आ गया है, अब ये grasses grow भी कर सकते हैं, तो they would have started growing those grasses and further domesticating animals and other things. Okay, so sedentary lifestyle earlier would have come up जब इन्होंने ग्रास को accidentally discover किया, but जब population और बढ़ गई तो they had a motivation to further cultivate those grasses in the plain lands. ये समझ में आया आपको? ओके, जस्ट लाइक दिस। नहीं, सेडेंटरी फोरेजिंग के टाइम पे नहीं, अपेंडिक्स का तो केस आप समझ लो कि होमो इरेक्टस के बाद से अपेंडिक्स काफी ज्यादा कम हो गया बिकॉज़ हमने फायर डिस्कवर कर ली थी वहां पे। तो आपको सेलुलोज का जो डाइजेशन का काम तो फायर डिस्कवरी के बाद ही खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां से हमने कुक्ड फूड खाना शुरू कर दिया। तो सेलुलोज जैसे जब आप कुक्ड फूड खाओगे तो सेलुलोज तो खत्म हो जाएगा। घास भी तो कुक्ड खाएंगे ना। फायर तो कब का डिस्कवर हो चुका है, इट्स बीन 2 लाख ईयर्स अगो। नाउ वी आर टॉकिंग इन अ टाइम दैट इज जस्ट बिफोर न्यूलिथिक, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 13-14 हजार साल पहले की बात है। ओके, और फायर तो हमने मतलब हमारे पास कितने एविडेंसेस आ गए कुक्ड फूड के। ओके, जस्ट लाइक दिस। मार्क कोहेन, according to Mark Cohen, population pressure and climate change in bracket particular climate change के bracket में लिखो but not extreme, and climate change would have incentivized people to domesticate plants and animals. Summer got hotter and drier than before. Summer got hotter and drier than before, and winter colder. People such as Natufians exploited seasonal grains intensively. They developed elaborate technology for storing and processing grains. These technology or tools would have been heavy enough. And hence prevented mobility. This led to the birth of sedentary foraging. Sedentary foraging would have led to increase in fat content in the body, and ultimately ये बीच correlation I am skipping this, ultimately increase in the population, fat content, ovulation and then population growth, and ultimately to the population growth. This would have led to resource scarcity. And hence the people in these region would be incentivized or would be motivated to plant crops and domesticate animals for their survival. ठीक है, so this is the story of Middle East region
खास करके, और सम ऑफ द यूरोपियन रीजन जहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम रही होगी प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ रही होगी, दिस वुड हैव लेड टू सेडेंटरी फोराजिंग, एंड जहां पे उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया होगा कुछ ग्रासेस को जिसको वो कंज्यूम कर सकते हैं, बट दिस ग्रासेस कंज्यूम करने की वजह से सेडेंटरी फोराजिंग बढ़ जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ वापस बढ़ेगा, रिसोर्स स्केर्सिटी और बढ़ जाएगी, एंड दैट वुड अल्टीमेटली इंसेंटिवाइज देम टू कल्टीवेट और डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दिस इज व्हाट द एंटायर जर्नी ऑफ मेसोलिथिक एज। इस यहां से मतलब कि पेलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच में ये पूरी स्टोरी है जो दैट इज हैपनिंग इन द एंटायर मेसोलिथिक एरा। ओके, नाउ देयर इज अनदर प्लेस मेसोअमेरिका, जहां पे वी फाइंड this transition as well. Mesoamerican region, that is South America and North America के जो बीच वाला region है, ठीक है, that is called as the Mesoamerican region, and here also we find the same kind of features. Okay, that is the transition from paleo to neo. But here the theory that we have learned abhi tak, that is population growth, climate change, that would have incentivized people to cultivate and domesticate plants and animals, this does not fit here. Here the thing is that it's neither the climate change nor the population pressure, but it's believed that people desire of surplus would have incentivized them to cultivate. मतलब लोगों को डिजायर थी टू कैरी ऑन सरप्लस, टू पोजेस मोर। यहाँ पे ना क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा ड्रास्टिक हुआ है, ना कि पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज्यादा था, बट स्टिल एंड दे हैड मैकेनिज्म्स टू मैनेज द पॉपुलेशन एज पर द क्लाइमेट चेंज, कि जब सरप्लस होता था तो पीपल यूज्ड टू कलेक्ट टुगेदर, ठीक है, एक ही जगह पे, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज बाउंटीफुल थे, तो उस एरिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए दे वुड कम टुगेदर। बट जब डेफिसिट होता था तो पीपल स्टार्टेड डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे बैंड्स में रहते थे कि अपने परिवार का काम चल जाएगा, उस किसी भी एरिया में चले जाएंगे, दे विल बी एबल टू मैनेज। ओके, तो माइक्रो एंड मैक्रो बैंड्स विल स्टडी हियर, बट यहाँ पे द पीपल डिजायर टू सरप्लस मींस सिंस दे वर लिविंग लाइक दिस कि माइक्रो एंड मैक्रो बैंड्स में, सो नाउ दे रियलाइज कि अगर इनके पास सरप्लस होगा तो दे कैन लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे कैन एंजॉय अ मोर बाउंटीफुल लाइफ, एंड ड्यू टू व्हिच दे स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स रादर देन द क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से कंटीन्यूअस डेफिसिट था, ऐसा कभी नहीं हुआ। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? जस्ट लाइक दिस Mesoamerica. The theory mentioned above does not fit Mesoamerica. Does not fit Mesoamerica. Difference in Mesoamerica was that they were not forced due to climate change or population pressure. They were not forced due to climate change or population pressure. This transition was voluntary in nature. This transition was voluntary in nature, and it was because of desire to obtain or possess surplus. To obtain or possess surplus. ठीक है, so this is the case of Mesolithic, and the reason कि domestication क्यों हो रहा होगा, so you just have to remember two things कि major reason is climate change and increase in population pressure. Now the next, let's see Mesolithic in Europe. So यूरोप में you will find Mesolithic sites available in abundance. Almost जहां-जहां पे भी आपको Paleolithic मिला है, you will find a continuity of availability of Mesolithic sites available in the strata level. That means सबसे टॉप पे आपको Neolithic, then Meso, then upper Paleo, middle Paleo and lower Paleo. आपको ये पूरे के पूरे sites strata में मिलते हैं. And just to tell you the numbers, Germany and Switzerland they got 1500 sites, 400 in France, Austria got 2000 sites. So this is the number. Means small countries having reporting like 1000 sites of Mesolithic. That shows that कि यूरोप में तो Mesolithic was a well established transition. और इसलिए इसको Epipaleolithic कहा जाता है. Epi का मतलब होता है over and above Paleo. Okay, so Epipaleolithic कहा जाता है. That means the layer just above the Paleolithic. So just remember this word because they might try to confuse you. आपसे Epipaleolithic culture के बारे में पूछ ले. तो Epipaleo का मतलब होता है Mesolithic culture. Okay, so in Europe you will find different types of Mesolithic in different areas. जैसे कि हम लोगों ने different type of tools देखे थे in upper Paleolithic culture. 5 types of upper Paleolithic culture tools. In the same way, Europe again has different types of Mesolithic in different areas. So they are, just remember the name, Maglemosian. Okay, this is the tool technology that was discovered in Meglemos area in Denmark, and the nearby region that is Denmark, Sweden area. Okay, so इस Meglemos का मतलब होता है big bog, दलदल. Okay, and that's why it's found near lakes and marshes or near coastal region. In fact, most of the Mesolithic culture has been found near coastal region. Coastal means river banks या फिर lakes और marshes, इन सारे areas में मिला है. Okay, now here you will find just right small points हैं. Remains of fishes, edible water birds, swan, ducks and geese. Remains of fishes, edible water birds, swan, duck and geese. One special feature of this is Meglemosian culture is presence of non-lithic culture, non-lithic tools. Non-lithic means non-stone tools. ठीक है, और mainly bone tools in existence. So these bone tools are harpoons, fish traps, and fish hooks, antlers, fish hook antlers. ठीक है, next one is Tardenoisian. So it's found in a particular region in France, and the tools here are specifically Mesolithic or microlith tools are there. No heavy tools are present here. I talk about this microlith just after I explain all these features, all these areas of Europe. So no heavy tools, microlithic tools are there. Okay, third one is Azilian. So Azilian, it's also from France, and it's found just above the upper Paleolithic culture, Magellonian. Magellonian culture के just ऊपर मिलता है. Upper Paleolithic में, if you remember, we have studied 5 types of upper Paleolithic tools. Magellonian was the one जो mainly art type के tools वगैरह, जो सबसे latest वाला था, सबसे last वाला, that is Magellonian. Okay, so France में Magellonian के just ऊपर we have got Azilian, and here we will find points, scrapers, lunates,
and trapeze. So lunates means जो crescent form में tool होंगे, that is lunar tools, and trapeze means trapezium form में tools होंगे. So this is the sharp edge. और here यहाँ पे this is the sharp edge, that is this is lunate, this is the trapeze, and here you will also find several engraved pebbles like this. आप शॉर्ट नोट लिखते जाओ उसमें खोजते खोजते तो फिर engraved pebbles. Okay, then the next one is Asturian. So this Asturian is found in Spain and Portugal. Here in this case we basically find big to medium sized pebbles. देखो अब ये exactly याद करना तो थोड़ा difficult है, but लेकिन नाम आपको याद करना पड़ेगा. Even if you bluff the content inside in these features, but the names are very much important and किस एरिया में ये मिले हैं वो important हो जाता है. अब Mesolithic in Europe पूछ लिया तो you have to talk about these features. And अभी तक जैसे कि I think last year Mesolithic in Europe या उसके last year Mesolithic in Europe पूछा है. Last year पूछा है. Okay. So next is Larnian. So Larnian was found in Ireland region. And here you will find backed blades. So in backed blade आप इस तरीके का blade होगा, suppose जैसे कि आपने कोई blade बनाया तो उसके ऊपर एक handle होगा यहाँ पे बैक साइड पे जिससे आप उसको होल्ड कर सकते हो just to use it. So that is what is called as backed blade. Okay, then Soviet-Iranian. Here in Soviet-Iranian you will find small blades and then triangular points and lunates. Triangular points can be like this and lunates. Okay, Soviet-Iranian, France. Okay, now the tools in the Mesolithic era. किस टाइप के tools मिलते हैं? So the tool technology of Mesolithic is called as microlithic tool technology. तो micro का मतलब क्या हुआ? Small, and lith means stones. So microlith means ये बहुत छोटे stone tools होंगे. Okay, it will not be as heavy as it used to be in the Paleolithic culture, but smaller tools, and that's why it is usually believed that they would have used pebbles. तो छोटे-छोटे पत्थर मिलते हैं आपको, छोटे-छोटे pebbles, कंकड़, उसको modify करके they would have made tools rather than big core stones जिसको use करके या तो flakes generate किया हो या फिर so this tool technology is called as microliths, and here you will find the existence of geometry shaping, मतलब symmetrical tools होंगे जो कि geometrical होंगे या फिर crude geometrical होंगे. So you will find tools in the shape of triangles, trapeze means दो side parallels होते हैं, trapezium आप लोगों ने पढ़ा होगा, and then lunates, that is semicircular और crescent form में tools आपको देखने को मिलेंगे. Means that means the tools were shaped properly, they were lighter, more precise and smaller in nature. That is microlithic tools. So these type of tools, that is microliths. Okay, plus heavy incidences of bone tools. Okay, so tools like harpoons, hooks, antler tools and ivory tools. बहुत ज़्यादा sharp होंगे. That is what means by precise. Okay. Also, you will find tools like chisels, blade, and axes and edges. So what is axe and what is edge? So axe में क्या होगा कि जो इसका cutting edge होगा, that will be parallel to the handle. That is axe. This is the cutting edge. This is the handle. इसके parallel होगा. And edges में क्या होगा? The cutting edge will be perpendicular to the handle. This is the cutting edge. This is the handle. So it will be perpendicular to the handle. Okay. Chisel आपको पता ही है. That is जो हसिया जिसे वो हार्वेस्टिंग करते हैं या घास वगैरह काटेंगे. So chisel will be there. Okay. So these are the tools. Now, as we have seen कि cultural life कैसी होगी यहाँ पे. So it will be the beginning of sedentary lifestyle. Ecological condition आपको पूरा बता दिया कि कैसे क्या होगा कि that sedentary foraging will start and then they will gradually start to domesticate plants and animals, and वहाँ पे sedentary living would actually begin. And here since they will be the first one to grab surplus, to have surplus. जैसे कि आपको जो एक्सपेरिमेंट बताया था Kent Planary ने जो कंडक्ट कराया, that is if by using Mesolithic tools or microlithic tools, if they are able to harvest the grains for 5-6 weeks, they will easily be able to gather that much grain that will be suffice them for one year. तो यहाँ इसका मतलब है कि पहली बार इनको surplus मिला होगा. So for that surplus there is need to store that surplus. कैसे store करेंगे? So we have found evidences of pottery here. Okay, so it's the first time we discovered pottery, and
it's from Germany in the place called as Erdbowl. We discovered the use of potteries. Okay, then it said that it's a transient stage or a preparatory stage for sedentary living. तो इस वजह से जो potteries हैं, that is very rough और crude form of potteries. Later on wheel की discovery होगी and they will start making wheel based potteries जो कि बहुत ज़्यादा finely designed होंगी, finely carved होंगी. Okay, so this happened. Then we also have evidences of warfare. Okay, it's the first time that population started to increase and organization of people into different groups in order to capture somebody else's area. ठीक है, तो warfare की beginning है जैसे कि इंडिया में there is a place Sarai Nahar Rai in UP, and here we have clear cut evidences of warfare wherein a particular microlith has been found that has been inserted into the rib of a skeleton. skeleton मिला जिसके यहाँ rib में एक microlith tool फंसा हुआ है. So definitely it shows that it has been through warfare or it has been due to some kind of organized conflict that particular person was killed by a microlith. और भी ऐसे बहुत सारे skeletons मिले वहाँ पे, तो और यूरोप में भी ऐसे कई सारे skeletons मिले हैं that clearly shows that there has been organized warfare. Moreover, certain paintings also that have depicted the organization of warfare wherein a group of people might have conducted or might have been engaged in a group or communal conflict. Okay, so this is the case of warfare. Then paintings or art. So we have found a proper well painted area in Spain जहाँ पे you will find a painting very famously called as Man of Bicorp. आपके उसमें painting बनी होगी वो. So in Man of Bicorp, and please exam में कोशिश मत करना इस painting को draw करने के लिए. Okay, and नहीं, I'm not joking. Actually, I have seen 2 papers इस टेस्ट सीरीज में जिन्होंने Man of Bicorp को draw करने की कोशिश की. So I was like completely surprised कि यार इतना फुर्सत में टाइम था कि आप Man of Bicorp draw कर रहे हो वहाँ पे. So Man of Bicorp, here in this case, a man has been shown to collect honey. ठीक है. So and the second very famous painting is Dancers of Kogul. So in Dancers of Kogul, it has been seen that around a single male, individual male with very large phallus, several women are dancing around him. Okay, it shows that this painting is of or increases the fertility, maybe related to the charm of fertility or maybe some ritual related to increase the fertility of the group. Okay, maybe इस type का कोई painting होगी. Okay, then burials. So burials here, आपको यूरोप में in Mesolithic era, you will find the evidences of megalith burials. Mega का मतलब big, lith means stone. सो मेगालिथ बरियल से मतलब जब जहां पे किसी को बरी करेंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहा होगा जिसकी सोसाइटी में पोजीशन काफी हाई रही होगी, तो उसके बरियल पिट के ऊपर एक बड़ा सा स्टोन इरेक्ट कर दिया एज ए ट्रिब्यूट, एज ए मेमोरी. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मेगालिथ burial. So we have found several kind of megalith burials in Britain, Ireland, Scandinavian countries, and the biggest one is in Strait of Sicily, Rome में. That is 39 feet long stone and approximately 5,30,000 pound के आसपास का वो stone था. That has been erected at a burial site. Okay. So this is about the Mesolithic of Europe. Now there is one specific site or 2 specific sites that are also very important. The one is Natufian, the second one is Mesoamerica. So I'll just briefly cover. आपके heading में दिया हुआ है कि Mesolith in Asia, and I have already told you the story of Middle East कि कैसा रहा होगा वहाँ पे. क्लाइमेट ऐसा था कि ग्रासेस ग्रो होना शुरू हुई, sedentary foraging would have started. तो अगर आपके पास Natufian के बारे में कुछ पूछता है, ठीक है, तो आपको ये नैरेटिव तो बताना ही होगा कि मिडिल ईस्ट में जब क्लाइमेट चेंज हुआ, what would have happened? People would have discovered grasses, sedentary foraging, fat increase, population increase, okay, resource crisis, cultivation of same grasses. और R selected species कहते हैं इनको. R selected का मतलब हमने पढ़ा है K selected reproduction and R selected reproduction. K selected में क्या होता है? K selected किसके केस में होता है? फीमेल या फीमेल? फीमेल क्या करता है? These species, we are K selected species. Okay, why? Because we require a lot of time to develop. Okay, and that's why we require a lot of care by the parents. But R selected species कौन से होते हैं that do not require a lot of time to develop and mature? So these grasses were R selected species. कई सारे पेड़ पौधे होते हैं that they are K selected. आप आज प्लांट करोगे, okay, and that will take around 20-25 years. Maybe your next generation would be able to see fruits in it. ऐसे पेड़ होते हैं जिसको जैसे नारियल का पेड़, कोई हर कोई नहीं, आप उसको आज अगर आपने नारियल पेड़ शुरू करने की कोशिश की कि आप बिजनेस बनाओगे नारियल के पेड़ से, तो maybe it will take 15 years or 10 years minimum that you will plant a tree. It will grow to a certain extent that it will start giving you the fruits. So it's a K selected species. But these grasses like wheat, rice, और all these crops that we grow seasonally, ये बहुत कम टाइम में एक हार्वेस्टिंग सीजन में they will be able to, आप उसको सो करोगे और उसमें मैच्योर होकर वो फ्रूट दे देंगे आपको. लाइक जो वीट का कल्टीवेशन है, राइस का कल्टीवेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द वेजिटेबल्स कल्टीवेशन जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो आपका एक राबी सीजन आता है, एक खरीफ सीजन आता है, और उसके बीच में जो वेजिटेबल का क्या नाम है उसका, हाँ, राइस सीजन. ओके, सो these are the R selected species जो बहुत कम टाइम में they will grow, they will mature and they will give you the harvest. So this discovery of these kind of species was a benefit for the Mesolithic era, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये अगर आप कल्टीवेट करोगे तो 3 महीने में तो ये ग्रो करने लग जाएगा and it will be edible or ready to consume. They started growing it. Okay, and जिसकी वजह से in certain areas in Middle East, specifically the Natufian area, you will find a lot of population increase and hence rise of village type settlement. One of the most famous area is the Natufian culture. So Natufian is the area of Israel and Jordan. So there is a very famous village in Israel. That village is Ainan village. And in this Ainan village, Ainan area, you will find 3 villages of Mesolithic era in sequence, and one over the other. And it has been discovered that each one of these villages had approximately 50 circular pits or houses. And here, floor of each of these houses was a bit sunk into the floor, means जो ground से थोड़ा सा नीचे बनाया हुआ था. Suppose this is the ground, so the floor will be something like this. बाकी यहाँ से ground means थोड़ा सा घर नीचे की तरफ धंसा हुआ था. And maybe the reason might be to get or to make the climate cool. Just because की नीचे की मिट्टी थोड़ी ठंडी होती है, तो that's why the house was little sunk into the mud, and that is one of the reason. Now you will also find that there were stone paved walks, मतलब जो उनके चलने का एरिया था वहाँ पे गिट्टियाँ और stones रखे हुए थे, so that ये मिट्टी वाला एरिया है पूरा sunk ना कर जाए. It's like it's more like a indication to the civilization type कि roads वगैरह टाइप के कुछ structure बन रहे थे. Okay, and also permanent hearths have also been observed in the Natufian region. Now you will find that several tools that were related to harvesting or cutting of wild grasses have been discovered. Like chisels have been there, sickles have been there, and moreover blades, and also several microliths have been discovered in the Natufian culture. Okay, now
here you also find that evidences that they used to have surplus plus they used to store surplus. एंड सरप्लस के लिए आपको यहाँ पे पिट्स देखने को मिलेंगे, जो घर के अंदर ही कुछ एरिया है जहाँ पे इट्स बिलीव दैट दे यूज्ड टू स्टोर surplus. So there will be a pit for storing surplus, a pit for storing or for refuse or excreta and all that stuff. Then here you will find evidences that social complexity has increased. That means inequality. Surplus आ गया है तो किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास थोड़ा कम होगा. And that's why social inequality also started to enter into the society. It's the first time you will find the existence of social inequality, and that is clearly visible in the burials. कि किसी के burial sites में आपको ज्यादा grains मिल रहे हैं या ज्यादा finely crafted tools मिल रहे हैं और किसी के burial site में आपको कुछ नहीं मिलेगा. ओके, और देखो burial sites में adults में मिले तो भी समझ में आता है कि वो शायद अचीव्ड होगा, बट यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे मिले जिसमें कुछ के burial sites में आपको वेल क्राफ्टेड टूल्स मिलेंगे. अब बच्चे के केस में हाउ कैन यू से दैट कि उसने अचीव किया होगा कुछ? सो डेफिनेटली दैट हैज बीन इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स, मतलब फ्रॉम द पेरेंट्स. तभी तो उसके 5 साल के बच्चे को मिल गया तो उसके burial sites में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टोन टूल्स और वेल क्राफ्टेड स्टोन टूल्स. ओके, सो दिस इज द केस ऑफ Natufian कल्चर. देन सेकंड थिंग दैट आपको यहाँ पे जो एविडेंस मिलता है कि न्यूट्रिशनल चेंज होने की वजह से बॉडी में क्या चेंज आया, तो यू विल फाइंड टूथ एनेमल में डीके है काफी ज्यादा. दैट मींस इट शोज दैट कि कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना ज्यादा शुरू हुआ. प्लस वी हैव फाउंड एविडेंस ऑफ स्टेचर डिक्लाइन, कि हमने जब शिफ्ट किया फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू sedentary lifestyle, the stature due to less physical activity plus due to shifting to a single type of nutrient, stature started to decline as we shifted from hunter gatherers to sedentary lifestyle. So यहाँ पे आपको वो सारे एविडेंसेस मिलेंगे, स्टेचर डिक्लाइन मिला है. ओके, प्लस टू डिके एंड ऑल दैट स्टफ. नाउ मीसोअमेरिकन एक साइट है in the North and South American region. So it's the first site in the New World area. ठीक है, New World that is South and North America वाले में approximately 10,000 years ago. And here due to climate change, what actually happened was deciduous forest and also grassland started to take place, or grassland expanded. Okay, and people began to rely more on the animals and plants. ठीक है, पहले they might be more focusing on the foraging, but right now they started into active hunting. मतलब मीट का कंटेंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. प्लस प्लांट्स जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज दे वुड हैव डिस्कवर्ड में भी ग्रासलैंड्स और ये सब दबाए, तो उस पे काफी ज्यादा डिपेंड होने लगे. नाउ हियर इट हैज बीन फाउंड दैट जस्ट लाइक इनका जो लिविंग स्टाइल था, दैट वाज मोर सिमिलर टू द शोशोन्स दैट वी हैव स्टडीड. कल्चर इकोलॉजी, रिमेंबर जूलियन स्टीवर्ट, याद है? So Julian Stewart वाले केस में when we have studied Shoshone, so he basically told that कि pine tree है जिसकी वजह से population बढ़ती घटती है. जहाँ पे pine tree की population काफी ज्यादा होगी, the population will be more, wherein it will be less, the population density will be less. यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था. Okay, that they used to move seasonally between communities. So जिस season में surplus होगा, resource surplus होगा, so communities will get together and they will form macro bands, wherein that macro band will be a group of 25 to 30 people. And जब ये resource shortage वाला time आएगा, तो they will split into small micro bands, having just 2 to 5 people. Okay, and gradually ये micro और macro बीच में shift करते रहते थे, depending upon the resource availability कैसी है. कि उस समय वो season of surplus है, तो they will live together, enjoy करेंगे. और जब season of deficit है, तो they will part away. They will live in small micro bands. Okay, and surplus के time पे इनका collective साथ रहने का एक advantage ये था that a lot of people they will apply a lot of force, बहुत ज्यादा force लगाएंगे, तो कई सारे natural resources को collectively exploit भी कर पाएंगे, because natural resources को exploit करने के लिए they require a lot of people, a lot of force together. एक दो आदमी के बस का नहीं होता. So in that case, living together, they will be easily able to exploit the environment. Okay, and that's why they came into macro bands. Now, here in this case, initially there was no evidence for social differences. Equal लोग थे, micro macro band में switch करते रहते थे, but gradually what happened, the desire for surplus so that they can live a comfortable life helped them move towards cultivation of plants and also domestication of animals. ये होने लगा, and here not much of the cultural differences cultural practices have been found or rituals have been found. Only one thing, that is rain dancing जिसको कहते हैं. Okay, that there was a dance floor kind of structure wherein people used to gather together when they were in macro bands and they used to perform some kind of dance. ठीक है, जिसके हमें कई सारी paintings भी मिली हैं, and then we have found several archaeological evidences also. Okay, so this is about the Mesoamerica. Now, India, Mesolithic culture in India. So this Mesolithic culture in India was discovered very early by a person known as Archibald Carlyle. Okay, somewhere in the mid 19th century, approximately 1866-67 में discover हो गया था. But what happened that we ignored it क्योंकि उस particular time पे it was believed that the transition from paleo to neo was sudden. ये बीच का transition period को हम recognize नहीं करते थे, इनफैक्ट globally recognize नहीं था. And that's why जब 1866-67 में कुछ ऐसा tool मिला, so it was not taken much care of. Okay, but later on gradually as the Mesolithic वाला idea grew up in the और यूरोप में भी discoveries होने लग गई, so then India में भी एक well planned और well organized Mesolithic culture को study करने लगे. And the scholars like V.N. Mishra, Sankalia, and then Bruce Foote and several other scholars, they started excavating the Mesolithic sites and proper उनको एक strata assign किया गया. Okay, so if we see Mesolithic site in India, they are divided into 5 major regions in India. So the first region is Gujarat, Rajasthan, and Maharashtra. अब इस रीजन में there are 2 major sites that are very famous and इसके ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. That sites are Bagor in Rajasthan and also Langnaj in Gujarat. अब आपसे लंगनाज पूछा गया तो एक मैप बना के वहां पे लंगनाज आप उसको शो कर दो कि गुजरात में लंगनाज है. ओके, एंड बागोर पूछा गया तो मैप बना के दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बागोर, जस्ट एक बार चेक कर लेना वो एग्जैक्टली कहां पे है, तो उसके आसपास ही कहीं बनाना. सो बागोर एंड लंगनाज. सो दिस बागोर वाज डिस्कवर्ड बाय वी.एन. मिश्रा एंड लंगनाज वाज डिस्कवर्ड बाय एच.डी. संकालिया. आई बिलीव वी.एन. मिश्रा के बारे में पहले पूछ चुके हैं. देयर इज अ हाई चांस दैट दिस टाइम टुडे दे माइट आस्क एच.डी. संकालिया आल्सो. यही कुछ बचे हुए हैं जिसके बारे में पूछना है. सो एज एंड व्हेन द कोर्स विल एंड, सो आई विल स्टार्ट मेकिंग सम ऑफ द हैंडआउट्स ये संकालिया और इन सब के ऊपर, तो मैं आप लोगों को शेयर करता रहूंगा एज एंड व्हेन आई विल बी मेकिंग द हैंडआउट्स. क्या हो गया? व्हाट्स द प्रॉब्लम? पेपर आ गया क्या? इतने हंसने की क्या जरूरत है? अच्छा, अरे यार थोड़ा सा राइज अप इस सब में, मतलब इतने मैच्योर हो गए यार, इन सब बातों पे हंस रहे हो इतनी देर से. So this region, so this is also called as, means collectively called as the western zone. Now there is another zone, that is the southern zone, that consists of Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
this one site in Tamil Nadu that is very famous, that is Teri sites, and it was discovered by Ayyappan. And also one particular site in Karnataka, तेहरी नहीं होगा यार, तेहरी तो अपना यूपी, हाँ तेरी तेरी, हाँ नहीं नहीं तेरी होगा यार, वो जहाँ पे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आप लोगों ने सुना होगा उसका, वो तेरी एरिया है, तेरी रीजन है, दैट इज महाराष्ट्र में कोई स्पेसिफिक मेसोलिथिक मतलब बहुत ज्यादा फेमस ऐसा कोई साइट नहीं है। ओके, नाउ अनदर केस इज संगन कल्लू इन कर्नाटका, and this was discovered by Sankalia. Then the other site is the central zone, that is MP, and here the most famous site is Bhimbetka. Okay, then the other one is eastern zone, so mainly sites of UP and Bihar. ठीक है, so एक साइट है यहाँ पे that is चिरान, and the other site is Sarai Nahar Rai. So this is discovered by G.R. Sharma. Sarai Nahar Rai and Belen Valley आसपास की साइट्स हैं। ओके, ये तो कभी मैंने भी खोजने की कोशिश भी नहीं की कौन है, जी आर शर्मा। ये मोस्टली ऐसे स्कॉलर्स हैं जो जिन्होंने अपने पीएचडी के टाइम पे आर्कियोलॉजी में जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ किया और फिर जाके एक इंटर्नशिप या इस जगह पे कहीं गए, किसी ने उनके मेंटर ने कोई साइट खोजी हुई तो उसके बगल में जाके एक और साइट डिस्कवर कर ली एक तरीके से। तो दैट्स व्हाई नॉट सो फेमस स्कॉलर कि वो दत्ता के बारे में पूछे, या चांसेस कम है पूछ ले तो पता नहीं, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। वो तो एक पूरे पॉलिटिकल इंटेंस उसके वजह से चल रहा है कि सिंधु सरस्वती सिंधु घाटी डिक्लेयर करने का, रादर देन सिंधु घाटी, तो उसको पूरा इंडिजनाइज करना चाहते हैं। मेसोलिथिक रॉक आर्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्वेश्चन आया 10 मार्क पेपर 1 में। हाँ ओके, देन एक और जोन है दैट इज दिस ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, दिस इज द ईस्टर्न जोन। हाँ सॉरी ये नॉर्थन जोन होगा ऊपर वाला, नॉर्थन जोन। ओके, now let's see the environment. So environment in the Mesolithic, so north वाला side जो था that will be more cooler, okay, and south will be more hotter, but the vegetation will differ here. So for example in Rajasthan and Gujarat जो current vegetation है वैसे ही आपको देखने को मिलेगी, that is scrub grassland, okay, मतलब आपको thick forest वगैरह तो राजस्थान गुजरात में भी नहीं मिल रहा है, उस समय भी ऐसा ही climate था, that you will find scrub forest and thick grass, not thick forest. Second MP area में that is Bhimbetka, hilly come forest areas. Then eastern UP में you will find thick forest, and that is the Ganges belt, and Odisha and West Bengal वाले region में also you will find thick forest, and south में you will not find you will find सब jungles and grassland, मतलब forest thick नहीं है but jungles हैं, पेड़ के patches हैं, plus grasslands are there. So this is the type of environment you will find here. The chronology, India में जो Mesolithic है that has been kind of reported very young compared to the Mesolithic in the other areas of the world. So approximately the age is 4000, बस एक साउथ साइड का जो है that is considered to be older one, but approximate age is 5000 to 1000 BC के आसपास का टाइम है. So in Karnataka, Andhra and Odisha, it is found that it is prior to 10,000 BC. Okay, थोड़ा ओल्ड है. बाकी in लंघनाज that is गुजरात 3000 BC के आसपास का टाइम है, and राजस्थान it's 5000 to 1000 BC. Okay, now one specific thing यहाँ पे जो tools आपको देखने को मिलेंगे, tools साउथ में it was crude tools, okay, or non-geometric tools, not crude but non-geometric. Okay, now in Rajasthan, that is Bagor region, you will find very highly geometric microlithic tools. Highly geometric means आपको proper trapeze, lunates, triangular blades, all that you will find here. And in Langhanath region, that is Gujarat, वहाँ पे आपको you will find semi-geometric tools. Okay, क्या? Crude नहीं crude हटा दे, non-geometric मतलब आप confusion नहीं होना. Non-geometric, semi-geometric, highly geometric. साउथ में नॉन, राजस्थान में हाईली जियोमेट्रिक, अंगनाज में सेमी जियोमेट्रिक. आप साउथ से नॉर्थ की तरफ आओगे तो पहले साउथ नॉन जियोमेट्रिक, फिर गुजरात आएगा दैट इज सेमी जियोमेट्रिक, हाईली जियोमेट्रिक राजस्थान में. ओके, हाँ तो सेम ही हो. वो हमारे लिए ना कि हम एग्जाम में लिख सके कुछ. नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आप उस जाओगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन द एग्जाम कुछ भी. तो इस वजह से आपको याद करने के लिए कि वहाँ पे आप कैटेगराइजेशन देखोगे कि मेनली अब अगर कहीं से जहाँ से मैंने कॉपी किया है तो वहाँ पे तो और डिटेल में लिखा होगा.
और वहाँ से तो मैंने बस काम की चीज़ की आप ताकि एक पॉइंट लिख सको कि यहाँ पे मेनली हाईली ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स मिले हैं या सेमी ज्योमेट्रिक या नॉन ज्योमेट्रिक मिले हैं, तो जस्ट फॉर यू टू राइट, नहीं तो फिर ऐसे तो आप किसी भी साइट में कुछ डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे, कुछ डिस्टिंक्ट लिख ही नहीं पाओगे। तो प्रोपोर्शनेटली जिसका ज़्यादा होता है उसको डेफिनेटली उसको वो साइट डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं अपर पैलियो में मिडिल पैलियोलिथिक के कोई भी टूल्स नहीं मिलेंगे, ये मिला होगा। ओके, बट उसको मिडिल पैलियोलिथिक क्यों बोला गया? क्योंकि मेजरली आपको मिडिल पैलियोलिथिक के मिलते हैं, तो आप उसको मिडिल अब वही चीज़ लिखने जाओगे कि ये टूल्स यहाँ पे मिले हैं, तो अल्टीमेटली आप लोअर और मिडिल वाले में कोई डिस्टिंक्शन कर ही नहीं पाओगे, वो थोड़ा पंगा आ जाता है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर एंथ्रो पढ़ने बैठे हैं, आर्कियोलॉजी तो फिर अलग ही चला जाएगा। हाँ। हाँ, हड़प्पन से यंग का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली इंडिया में आप देखो कि 5000 सबसे ओल्डेस्ट साइट है, ओल्डेस्ट टूल्स वगैरह मिले, तो दैट मीन्स कि जब हड़प्पन इंडिया में चल रहा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन किसी जगह पे, तो इस समय राजस्थान में अगर इवन हड़प्पा भी रहा होगा तो कई लोग मिडिल मेसोलिथिक टूल्स को यूज करेंगे, वहां पे प्रॉपर कल्टीवेशन शुरू नहीं हुआ होगा। आर यू गेटिंग दिस? कि दे माइट मींस एंटायर इंडिया वाज विटनेसिंग हड़प्पन कल्चर, नॉट एंटायर इंडिया मींस कुछ एरिया ऑफ इंडिया वाज एक्सपीरियंसिंग हड़प्पन कल्चर। हाँ, लोथल आपको गुजरात वाले रीजन में आ गया। हाँ, 3000 बीसी, तो उस हड़प्पन का आपकी एज कितनी है? 2600 टू 1600 बीसी के आसपास की एज। ओके, 3000 बीसी, ठीक है। नाउ सर्टेन की साइट्स वगैरह यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, लाइक यू विल फाइंड सराय नहर राय, जो वेयर यू विल फाइंड आर्टिफिशियल इरेक्टेड स्ट्रक्चर्स, एंड राजस्थान वाले एरिया में यू विल फाइंड बागोर में दैट द फ्लोर हैज बीन paved with some kind of concrete, जो कि रिवर से लेके आए थे और उन्होंने फ्लोर को पेव कर रखा है। सराय नहर राय में स्पेसिफिकली यू विल फाइंड दैट वो एक वन पर्सन वाज किल्ड बाय यूजिंग अ माइक्रोलिथ, तो एविडेंस ऑफ वॉरफेयर आपको मिल रहा है। देन इन सर्टेन एरियाज इन राजस्थान फॉर एग्जांपल एंड गुजरात लंगनाज में यू विल फाइंड राइनो ब्लेड्स, ठीक है, राइनोसोरस को यूज करके कुछ उसके कॉलर बोन्स को यूज करके कुछ टूल्स वगैरह बनाए हैं, राइनो शोल्डर ब्लेड्स। मोreover लंगनाज में यू विल फाइंड 14 बरियल्स, स्पेसिफिकली बरियल्स, एंड these people were pointed in a specific direction, east to west I guess। तो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 14 स्केलेटन्स को बरी किया गया, that shows कि there was some kind of ideology related to burials, that the dead body should be placed in some orientations। okay, now central India में आप देखोगे that भीमबेटका you will find microliths proper, okay, and as well as painting on the cave walls। यहाँ पे there is a person मटपाल and वाकणकर, आप लोग देखो उसमें आपके में लिखा होगा they have studied Bhimbetka painting and they have classified the Bhimbetka paintings according to different kind of motives, okay, and they have also classified the kind of colors, किस particular color use किया था। तो oldest one they used green color। क्या हुआ? वाकणकर भी लिखा होगा। हाँ, ओके, देन नॉर्थ में सराय नहर राय एंड जो एविडेंसेस ऑफ वॉरफेयर एंड ऑल दैट स्टफ वी ऑल नो दैट, एंड एक बेलन वैली है, तो आप थोड़े से उनके डिटेल्स एक बार देख लेना। अब देखो जो क्वेश्चन आया है आज का, दैट इज मेसोलिथिक रॉक आर्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, 10 मार्क का क्वेश्चन। नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली मेसोलिथिक रॉक आर्ट तो पढ़ने बैठ नहीं रहे। इट्स नॉट लाइक कि आपको रॉक आर्ट पढ़ना ही होगा तभी आपको पता होगा, तभी आप लिख सकते हो। बट द नेक्स्ट वन जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूलिथिक कल्चर, तो वहां पे देयर इज अ स्पेसिफिक हेडिंग रिलेटेड टू आर्ट कल्चर, और वहां पे आप क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे क्यूप्यूल्स है, वॉल्स पे पेंटिंग्स हो रखी है, बट आपको यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए कि मेसोलिथिक कहाँ कहाँ मिला है। ओके, एंड रेस्ट यू कैन, रॉक आर्ट का मतलब केव्स पे पेंटिंग वगैरह हुई होगी या रॉक्स पे एंग्रेविंग्स होंगी। ओके, तो यू विल हैव टू यूज दैट नॉलेज टू राइट द आंसर कि आपको भीमबेटका में मिला, आदमगढ़ में मिला है केव में शेल्टर, और मेसोलिथिक का एज क्या है, किस टाइप का एनवायरनमेंट था, एंड रॉक आर्ट एक हेडिंग होता है जिसमें 50 to 60 वर्ड यू शुड बी राइटिंग रॉक आर्ट्स, एंड यू शुड बी यूजिंग व्हाटएवर नॉलेज यू हैव अबाउट रॉक आर्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, रादर दैन कि यार ये तो स्पेसिफिकली पढ़ा ही नहीं मैंने। यू आर अवेयर ऑफ मेसोलिथिक, यू आर अवेयर ऑफ द टाइम पीरियड, यू आर अवेयर ऑफ द पर्सन। अब जैसे कि आप लोगों को एक दो नाम पता है कि भीमबेटका की पेंटिंग को एनालाइज किसने किया, मटपाल ने किया, वाकणकर ने किया। वी हैव स्टडीड और आई हैव यूज्ड दैट नेम ऑफ वाकणकर मल्टीपल टाइम्स व्हेन आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी दैट वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, उसको किसी ने डिस्कवर बताया कि यहाँ पे भीमबेटका है, और वो ट्रेन से कूद के जंगल में डिस्कवर करने लग गया और उसने पूरे भीमबेटका केव्स को डिस्कवर किया। So you should know this, since you know this story, आपको वही नॉलेज को यूज करना है टू राइट आंसर, बिकॉज अगर आप इस तरीके से वी गो डीप इनटू ऑल दीस एस्पेक्ट्स कि अब हम मेसोलिथिक रॉक आर्ट को प्रिपेयर करेंगे उसके लिए अलग से, तो नेक्स्ट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू आस्क मेसोलिथिक रॉक आर्ट, दे विल आस्क समथिंग अपर पैलियोलिथिक रॉक आर्ट इन डिटेल, तो वहां पे इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू, आप कितना याद कर लोगे, कितना एनालाइज कर लोगे, ठीक है। इस बार तो आप मेसोलिथिक रॉक आर्ट के ऊपर एक नोट बना के रख लोगे, बट नेक्स्ट टाइम व्हाट? सो आपने जितना पढ़ा है उसी को यूज करना है टू राइट एन आंसर। सो जो भी पढ़ा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट यू और टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट शुड नॉट बी लाइक कि मेसोलिथिक रॉक आर्ट करके एक स्पेसिफिक हेडिंग नहीं पढ़ी, ठीक है। भीमबेटका में मिला है, हमें ये पता है, डिस्कवर किसने किया हमें ये पता है, आर्ट को स्टडी किसने किया ये पता है, दैट इज मोर देन इनफ टू राइट 10 मार्क आंसर, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से यूज करना होगा, बिकॉज गेटिंग टू मच इनटू डिटेल इनटू आर्कियोलॉजी इन इटसेल्फ, आप इंडिया में आप नेक्स्ट लेवल इज कि दे माइट स्टार्ट आस्किंग द स्पेसिफिक साइट्स आल्सो। अब साउथ में कोई संगन कल्लू मान लो 10 मार्क के बारे में पूछ लिया, संगन कल्लू बताओ 10 नंबर, अब आप क्या करोगे? बस आपको उस समय इतना पता होना चाहिए कि साइट कौन सी है। संगन कल्लू इज अ मेसोलिथिक साइट दैट वाज प्रेजेंट इन कर्नाटक, दैट्स इट। बाकी सब कुछ जो लिखना है दैट इज अबाउट मेसोलिथिक ही लिखोगे, बट ये इतना दिमाग चलना चाहिए कि संगन कल्लू क्या है। जैसे कि नटुफियन पूछा गया था, तो नटुफियन पीपल वे लाइक कि नटुफियन के बारे में कुछ पता नहीं, क्या लिखे, बट नटुफियन आप नोट्स में देखो, नटुफियन कोई भी मेसोलिथिक के नोट देखो, किसी के भी नोट देखोगे आप, नटुफियन के बारे में उसने लिखा, एक लाइन जरूर मेंशन की होगी, ये मिडिल ईस्ट का एक मेसोलिथिक साइट है, दैट्स इट। ऑल यू नीडेड टू नो वाज कि मेसोलिथ है वो, एंड बाकी आप नटुफियन का लोकेशन बताओ और वहां पे बाकी मेसोलिथिक कल्चर बताओ। तो अगर मेसोलिथिक साइट है तो इट विल फॉलो मेसोलिथिक कल्चर, तो माइक्रोलिथ्स होंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट्स होगा, और इस टाइप के सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बरियल्स होंगे, परमानेंट ड्वेलिंग्स देखने को मिलेंगी, एंड ऑल दैट स्टफ यू कैन राइट एवरीथिंग देयर। ये आप ब्लफ नहीं कर रहे हो, यू एक्चुअली आपको जनरलाइज इसीलिए करके दिया गया दैट यू कैन यूज योर ब्रेन एंड राइट व्हाटएवर यू हैव लर्नड अबाउट इट। ओके, सो प्रिपेयर योर माइंड अकॉर्डिंगली, यू आर नॉट सपोज्ड टू रीड एवरीथिंग इंडिविजुअली, ऑलरेडी द एंथ्रो किसी ने कहा होगा कि बहुत छोटा है, ऐसा तो है नहीं कहीं से भी। सो रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज योर ब्रेन, जनरलाइज इंफॉर्मेशन को कैसे स्पेसिफिकली यूज करना है वो आपको सीखना होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेसोलिथिक।